So this is what I ordered from Flipkart Big Billion Days and अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा, देखते हैं कैसी आई है. This is a Series 7 watch, although Series 8 has been launched, but इसके फीचर एडिशन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए, so I have ordered this. And since I already have an iPhone, I'll see how to integrate it and see कि कैसे things work. So let's go. So I think this represents कि कितने टाइप के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वॉच के, राइट. एंड मेरी वॉच आई थिंक ये वाली है, ब्लू स्ट्रैप एंड ब्लू डायल. So we have I think 2 separate bands. ये शायद साइज़ के लिए they have given. कुछ लोगों का जिनका हाथ छोटा होता है, आई थिंक वो ये छोटे स्ट्रैप के साथ जा सकते हैं, नहीं तो स्टैंडर्ड साइज इज दिस. सो लेट्स सी. ये साइडवेज बैंड अटैच होगा and remaining things I think are same. We'll see the dial now and then we'll see how to attach this. ये क्लासिकल स्टैंडर्ड एप्पल थिंग. मैकबुक लो तब भी उसमें ऐसे ही आता है, सारे एप्पल प्रोडक्ट्स. इसको चार्ज करना पड़ेगा पहले, तो चार्ज कर देते हैं एंड देन वील सी हाउ इट स्टार्ट्स. वी हैव इट्स चार्जर. एक साइड थोड़ा ये डायल में लगने वाला चार्जर है एंड दूसरे वाला आई थिंक स्टैंडर्ड जो मैकबुक पोर्ट होता है उसमें, तो वी कैन चार्ज इट फ्रॉम दिस मैकबुक टू. देखते हैं कैसे होता है चार्ज ये. I think it is charged now. तो अभी इसे हटा के एक बार स्टार्ट करके देखते हैं कि सिंकिंग वगैरह का प्रोसेस था, दैट आई हैव डन. और अभी ये सिंक हो रही है वॉच. तो ये आप देख सकते हो कि इधर तक है, ये पूरा सर्कल फिल होगा. मीनवाइल हम इसके बैंड्स निकाल लेते हैं एंड